Hi guys, welcome back to the channel after the weekend. Hope you have a good weekend. So last week we have started with squamous cell carcinoma of pharyngeal tongue. We have seen it is that portion of the tongue which is posterior to circumvallate papillae. Then we have seen that there is a propensity for early regional lymph node metastasis and the main cause of the unknown primary phenomena जो यहाँ पे डेवलप होता है कार्सिनोमा. यूनिलैटरल या बायलैटरल मास हो सकते हैं और N3 प्रेजेंटेशन होते हैं मोस्टली और प्राइमरी ट्यूमर एसिम्टोमेटिक होते हैं. And last we have read about this was the base of the tongue carcinoma will be present with pain, dysphagia और माउथ थ्रोट ब्लीडिंग हिस्ट्रीज. तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे. नाउ विल बी कंटिन्यूइंग दैट. ओके, लेट्स स्टार्ट. नाउ कमिंग टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, लार्ज जो स्मॉल मासेस होते हैं वो तो नहीं दिखते हैं. तो फिर जो लार्ज फर्म नेक मासेस प्रेजेंटेशन आर सीन, और ये किस किस में दिखते हैं? सर्वाइकल टीवी एडिनाइटिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्क्रॉफ्यूला, देन कैट स्क्रैच डिजीज़, ब्रेकियल सिस्ट, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा मतलब मोर देन 40 ईयर्स या ओल्डर देन 40 ईयर्स पीपल, एंड हॉजकिंस लिम्फोमा less than 40 years people. Okay, now coming to the diagnostic workup. Okay, direct laryngoscopy with random biopsy of the pharynx and the base of the tongue is often required. तो pharynx and the base of the tongue का अपन डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करते हैं. एंड फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ द मास, तो फाइन नीडल एस्पिरेशन भी रिक्वायर्ड होता है. और अगर ये दोनों डायग्नोस्टिक वर्कअप फेल होते हैं देन एन ओपन लिम्फ नोड बायोप्सी वी डू एंड दैट इज़ द लास्ट रिसॉर्ट. ठीक है, जनरली ओपन लिम्फ नोड बायोप्सी वी डू इन लिम्फोमास. ओके, but in this also this is the last resort. If above two diagnostic workup fails up, we go for open lymph node biopsy. तो इशू क्या होता है? द इशू ऑफ एन ओपन नेक बायोप्सी इज अफेक्टिंग द prognosis and it is unresolved. If cancer is identified, the neck is treated with the cancer neck dissection, usually followed by radiotherapy. And if cancer is confirmed, a triple endoscopy, barium swallow, CT scan or PET scan of the esophagus is also recommended. Okay, that was about diagnostic workup. Now coming to histopathology. Usually these are poorly differentiated carcinomas. Poorly differentiated है तो prognosis ऐसे भी खराब ही है. Okay. Now, one particular variant that occur in this location as well as hypopharynx and larynx is the basiloid squamous cell carcinoma. तो एक वेरिएंट होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का विच इज़ नोन एज बेसिलॉइड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. इट इज़ मोर कॉमनली सीन इन this posterior tongue or pharyngeal tongue and his hypopharynx and larynx. So this basiloid squamous cell carcinoma is poorly differentiated, highly aggressive, and it is biphasic. Okay. Now biphasic is that the squamous component may be carcinoma in situ or an invasive lesion. तीनों में से कुछ भी हो सकता है. But whereas the connecting basiloid portion proliferate as an invasive lobule, nest or cords with pseudoglandular glandular spaces. Okay, तो जो एपिथेलियल कंपोनेंट होते हैं अपने वो तो कार्सिनोमा या इन्वेजिव ट्यूमर या फिर इंसिटू जैसे दिखेंगे, लेकिन जो ये कनेक्टिंग बेसिलॉइड पोर्शन है वो क्या करेगा? इट proliferate as invasive lobules, nest or cords with pseudoglandular spaces. Okay, there is also comedonecrosis and considerable mitotic activity. The basiloid cells are often surrounded by basal lamina like material. The stroma may be myxoid and the perineural invasion occurs. तो एक तो कॉमेडोनेक्रोसिस दिखेगा, दूसरा माइटोटिक एक्टिविटी भी अप्रिशिएट कर सकते हैं हम इसमें.
एंड थर्ड इज़ दैट कि जो इनका स्टोमा होगा वो मिक्सॉइड होगा और पेरीन्यूरल इन्वेजन तो होगा ही. ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास. विल बी कंटिन्यूइंग द ट्रीटमेंट एंड prognosis in the next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.